and the topic is really very easy, and the topic is prepositions. Today we are going to start with prepositions. What do you mean by preposition? Yes, what do you mean by prepositions in English? Yes, who can tell me this preposition in English? Preposition रहता क्या है? Yes, can you please tell me what is preposition in English? बहुत ही important topic मैं आज start करने वाला हूँ, and the students who are absent, may God help them. जो आज absent हैं, उन लोग का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बड़ा loss. Preposition. Of. Yes. The of. Okay. Shivdas is here, right? Yes, sir. Okay, Shivdas and Ankit. Okay. So prepositions means what? I'll tell you now. See, अभी कोई भी वर्ड रहेगा ना इंग्लिश में, उसको समझने का सीखने का कैसा, उसको मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए. प्री पोजिशन. ओके, ये एक वर्ड है. प्री म्हणजे पहिला, पोजिशन के पहले. ओके, प्री म्हणजे पहले. पहले पोजिशन मतलब यानी प्लेस. प्लेस जागा. तो जगह के जो पहले अपन वर्ड लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन. जगह के पहले अपन जो वर्ड लगाते उसको क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन. जाग्याचे जे आपण अगोदर आपण जे वर्ड वापरतात त्याला म्हणतात काय? आपण प्रीपोजिशन. जे आपण जाग्याच्या अगोदर आपण जे वर्ड वापरतात त्याला म्हणतात प्रीपोजिशन. उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं. ऐसा वर्ड जो कि जगह के पहले यूज करते हैं अपन. प्रीपोजिशन, जगह के पहले. प्रीपोजिशन, पोजिशन के पहले. अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है वेयर इज द स्पीकर. अभी स्पीकर कहाँ पे रखा है? टेबल के ऊपर है. सो आई कैन से ऑन द टेबल. जागा काय आहे? टेबल है का नाही? द टेबल. बरोबर. त्याच्या अगोदर आपण काय लावलंय? उसके पहले मैंने क्या लगाया? वर्ड ऑन. सो ऑन विल बिकम प्रीपोजिशन. ऑन क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन. ऑन द टेबल. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फोन. वेयर इज माई फोन? माई फोन इज इन द पॉकेट. माई फोन इज इन द पॉकेट. पॉकेट मध्ये. इन माय पॉकेट, इन द पॉकेट. माझ्या पॉकेट मध्ये. तो पॉकेट काय? प्लेस आहे. येस नो? प्लेस पोझिशन आहे पॉकेट. आता ते पॉकेट मध्ये आहे, आत आहे त्याच्या, मीन्स व्हॉट? इन द पॉकेट. इन विल बिकम प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर द पोजिशन और विच शोज द पोजिशन ऑफ अ नाउन. नाउन का पोजिशन और पोजिशन बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन. बहुत सिंपल है. कोई भी जगह रहेगा, वो जगह को बताने के लिए अपन जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्ड को अपन बोलते हैं प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज दिस लैपटॉप? ये लैपटॉप कहां पर है? द लैपटॉप इज ऑन द डेस्क. करेक्ट, वेरी गुड. द लैपटॉप इज ऑन द डेस्क. सो डेस्क का है, जागा झाली, पोझिशन आहे. और वो डेस्क के पहले कौन सा वर्ड लगाया? ऑन. वर आहे त्याच्या, डेस्कच्या वर आहे. That's what on the desk. On the desk will become, on will become preposition and desk will become position. Next one. Now, he is standing at the gates. At the gate. तो गेट वर थांबलाय. पोझिशन जागा कुठली आहे? गेट. गेट जागा आहे, पोझिशन आहे, आणि ऍट विल बिकम प्रीपोजिशन. पोझिशन के जो पहले अपन वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन. त्याला आपण काय म्हणतात? प्रीपोजिशन. ऍट द गेट. गेट वर. गेट वर. गेट के ऊपर अपन खड़े हैं. That's what at the position. So that's what preposition. At we are using for exact position. Sorry. Okay. So at the gate, on the desk, on the table, in the pocket, etc. And there are many prepositions we have in English. More than 130. How many prepositions do we have? More than 130. But the special prepositions and the common and the main important prepositions we have in English, which we are going to see today here in our class. Okay, let's start with our new session today, and that's what prepositions in English. It is a very easy topic, but you have to practice at home daily. Okay, you'll get the videos, and I hope you are watching the videos and you're learning it from there as well. So please, let's go now with our prepositions. Now prepositions English में बहुत सारे हैं, but आज अपन सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे बेसिक preposition देखेंगे इंग्लिश के अंदर, जो कि 3 है. First preposition is what? In. Next on, and next at. Now in म्हणजे आत. करेक्ट. ऑन म्हणजे वर आणि ऍट म्हणजे वर. फरक काय त्यांच्यामध्ये?
फर्क क्या है इनके अंदर? व्हेन डू वी यूज इन, ऑन एंड एट? सबसे ज्यादा इंग्लिश के अंदर ये यूज होता है। आप लोग कोई भी सेंटेंस उठाओ उस सब के अंदर आपको ये मिलेगा। मतलब 90% सेंटेंसेस के अंदर आपको ये प्रीपोजिशन मिलेगा, इन ऑन एट, इन ऑन एट, इन ऑन एंड। सो इन, ऑन, एट वी आर यूजिंग द मोस्ट। सबसे ज्यादा इन, ऑन और एट ही चलता है, उससे ज्यादा कोई भी दूसरा चलता नहीं है। सो इन, ऑन एंड एट। नाउ व्हेन डू वी यूज इन? आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. Good. So in, yes, Ankit, Karthik, Shivdas, Yes, listening? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इन, ऑन एंड एट ये सबसे बेसिक और सबसे मेन प्रीपोजिशंस है। ओके, सो इन, ऑन एंड एट, सबसे पहले हमारा आएगा इन। अभी दुनिया बोलती इन ऐसा यूज करते हैं, इन वैसा यूज करते हैं। आई गिव यू वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ इन, दैट व्हेन डू वी यूज इन? इनचा अर्थ काय असतो? आत. We use in for two things. Point number one, we use in when something is inside. आत असेल ना आत, जब कोई चीज अंदर रहेगा तब अपन यूज करेंगे इन। when something is inside, जब कोई चीज अंदर रहेगा। और when something is big, जब कोई चीज बड़ा रहेगा उसके लिए भी अपन क्या यूज करेंगे? इन। ओके, when something is big and when something is inside. For example, my phone is in my pocket, मेरे पॉकेट में है, माझ्या पॉकेट मध्ये म्हणजे आत आहे, इनसाइड। एंड वी लिव इन पुणे। अब पुणे कितना बड़ा है? सो वी लिव इन पुणे, बड़े चीज के अंदर। सो वी लिव इन पुणे, इन वी आर यूजिंग फॉर when something is big, when something is inside. Next, on we are using for surface. On we are using for surface. Surface और बेस के लिए अपन यूज करते हैं ऑन। सरफेस मतलब है नहीं, अभी फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हैंड, ओके, ये मेरा हाथ है। अभी इसके ऊपर मैंने क्या किया? फोन रखा इसको। वेयर इज द फोन? द फोन इज On the hand. करेक्ट, द फोन इज ऑन द हैंड। हातच्या हातावर फोन आहे। द फोन इज ऑन द हैंड, द फोन इज ऑन द हैंड। हैंड के ऊपर है तो वो फोन के लिए बेस कौन हो गया? ये हाथ हुआ। वो फोन के लिए सरफेस कौन हुआ? ये हाथ हुआ। ये सरफेस है। सेम केस स्पीकर। स्पीकर, वेयर इज दिस स्पीकर नाउ? द स्पीकर इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है स्पीकर। वेयर इज द डेस्क? वेयर इज द लैपटॉप? द लैपटॉप इज ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर है। वेयर am I sitting? I am sitting on the chair. I am sitting on the chair. I am sitting on the sofa. So this is what sofa base हो गया उसके लिए। सोफे के ऊपर बैठा हूं मैं, चेयर के ऊपर बैठा हूं मैं। Where is the speaker? The speaker is on my hand. The speaker is on my hand. So hand will become the base, hand will become the surface. So the speaker is on my hand. Okay, so on you use for surface or for base. Next one, at. When do we use at? Who can tell me this? When do we use at? Place. Exact place. Correct, exact place or exact time. Exact place or exact time, दो चीज के लिए अपन यूज करते हैं at. Point number one, we use at for exact place or exact time. दो चीज के लिए यूज करते हैं, एग्जैक्ट प्लेस एंड एग्जैक्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग एट द गेट। गेट क्या है? कॉलेज का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट प्लेस है। यस और नो? सेम केस, प्लीज मीट मी एट 6 o'clock। एट 6 o'clock एग्जैक्ट टाइम पे, एट। सो वी यूज एट फॉर एग्जैक्ट प्लेसेस। ओके, इन वी आर यूजिंग व्हेन समथिंग इज बिग, व्हेन समथिंग इज इनसाइड। वी यूज ऑन फॉर सरफेस, we use at for exact place and exact time. Any doubts? No, sir. No, sir. No, sir. कुछ भी रहेगा बिंदास बोलने का, ओके? कुछ भी जरा भी प्रॉब्लम रहेगा, प्लीज आस्क मी डायरेक्टली, फ्रैंकली आस्क मी डायरेक्टली, बिंदास आप लोग मुझे बोलो, I'll help you. So now this is what our grammar book, and in grammar book we are going to start a new chapter today, and that chapter is what with our prepositions. So अभी मैंने आप लोगों को 3 prepositions basic समझाया हूँ. We are going to see prepositions in English. All right, let's go. Unit number 100 and 106, 106. Yes, 106 it is. So unit number 106 here. In, at and on, places 1. Chapter number 1 for preposition. In,
at or on कब यूज करते हैं, in कब यूज करते हैं, at कब यूज करते हैं, it on. ओके वो अपन देखने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल इन अ रूम. अब रूम बड़ा होता है कि नहीं, रूम बड़ा होता है कि नहीं, क्या अपन बड़े होते हैं? No, sir. Room. हाँ, सो वी कॅन से इन द रूम. रूमच्या आतमध्ये आहे ना तो, त्यामुळे आपण काय बोलणार, इन अ रूम. नेक्स्ट इन अ शॉप. इन अ शॉप. नेक्स्ट इन अ कार. कारच्या आतमध्ये मीन्स देखो अभी अंदर खड़ा है देखो आदमी. व्हेन समथिंग इज बिग, व्हेन समथिंग इज इनसाइड, वी यूज इट इन. इन अ कार, इन अ रूम, इन अ शॉप, इन द वेदर, सॉरी इन द वॉटर. वॉटर पाण्यामध्ये, पाण्यामध्ये. इन द वॉटर, द फिश इज इन द वॉटर. नेक्स्ट इन द गार्डन. गार्डन मध्ये, गार्डन मध्ये म्हणजे गार्डन आता मोठा असतो त्यामुळे आता तिथे काय लावणार आपण तिथं, इन द गार्डन. इन अ टाउन, इन अ सिटी सेंटर, इन ब्राझील, इन पुणे, इन कॅम्प, in Urli Kanchan. So means what? All these things are what? Big. In Maharashtra, I live in Maharashtra, big hai. I live in Maharashtra, Maharashtra is big. I live in Pune, Pune is big. I live in Brazil, Brazil is big. I live in the city center is big. I live in the town, town is big. I live in the garden, garden is big. So where do we use in? When something is big, when something is inside. When something is big, when something is inside. For example, where is David? David Gudhai. He's in the kitchen, he's in the garden, he's in London. तो किचन मध्ये, तो गार्डन मध्ये, तो लंडन मध्ये. He's in the kitchen, he's in the garden, he's in London. What is in that box? त्या बॉक्सच्या आतमध्ये काय आहे? What is in that box? What is in that bag? What is in that cupboard? What is in that cupboard? What is in that box? What is in that bag? Next, Raquel works in a shop. Raquel works in a shop. ती एका शॉप मध्ये काम करते. शॉप मध्ये काम करते, इन अ शॉप. Raquel works in a bank. ती एका बँकेत काम करते, बँक मध्ये काम करते. Raquel works in a factory. फॅक्टरी मध्ये काम करते. Raquel works in a factory. I went for a swim in the river. River मध्ये मी गेलतो. I went for a swim in the river. I went for a swim in the pool. In the pool. I went for a swim in the sea. In the sea. Big. Next one. Milan is in the north of Italy. 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 Naples is in the south. Naples is in the south. Naples is in the south. I live in a big city. मी एक मोठी सिटी मध्ये राहतो. Means what? We are using big in for when something is big, when something is inside. When something is big, when something is inside. So I live in a big city. मी एक मोठ्या सिटी मध्ये राहतो. I live in a big city, but I would love to live in the country. I love to live in the country. In the country. Okay? Any doubts to anyone? No, sir. Can you please make sentences now? In. Yes, Ankit, say something. Karthik, I'm in the bar. I'm in the room. Shivdas, say something. Yes. Guddu, I'm I'm in in my the girlfriend's house. no. Yes, yes. Say something. Yes, Shivdas, say. I'm in the restaurant. Miss Chaitali, say some. Make sentence with in. पटकन आता, पटकन झटकन sentence बनवा. I'm in the pool. I'm in the pool. I'm in car. Yes. I'm in car. I am in the class. I'm in the class. I'm in shop. I'm in the shop. I am I in the am in the theater. I'm in the theater. Very good. I am in the house. I'm in the house. I'm in the Yes, school. I'm in the school. आता हम नाही जरा थोडे दुसरे पण घ्या जरा. Yes. Sentences please. We are in the room. We are in the room. There are clothes in that bag. There are clothes in the bag. Yes. Continue. We are in the bar. Yes. We are in the bar. We are in the bar. We are in the museum. We are in the museum. Yes. Continue please. He's in the pen. He's in the pain. इधर क्या?
Yes, They are in the ground. we are in the ground. I'm playing in the ground. I'm going in the shop. She lives in Brazil. He lives in Italy. I want to go. I want to live in Mumbai. Yes, continue. I want to go in New York. I want to go in the New York. In New York. I want to go in New York. Yes, Miss Chaitali sentences. I want to go in New York. Continue. Yes, He lives in India. he lives in India. Yes, continue. He get back in the town. Correct. He gets back in the town. Yes. Continue. There's lockdown in Rajasthan. In Rajasthan. In. Make sentences with in. Very easy. बहुत easy है. In. There is David many is makeup looking. grocery in the lady's handbag. Very good. In the lady's handbag. There are many groceries in the lady's handbag. James Bond live in England. England. In London. I was playing in the garden. My sister lives in London. I'm putting some pens in the box. In the box. I'm going in the bank. Guddu say something. I'm going in Empress Garden. Karthik say something. I have left my keys in the car. Very good. I have left my keys in the car. In the car. The water is in bottle. The water is in the bottle. Shivdas, Ankit. Sentences, please. Yes. A comb is in the drawer. A comb is in the drawer. He buys the painting in the mall. He buys the painting in the mall. Yes. Yes. The beautiful sarees sell in that shop. Correct. In the shop. Ankit say something. Guddu say something. In. He is Yes. painting the class. Correct. In the class. He is dancing in the stage. Can we say in the stage? On the stage. Very good. On the stage. कारण की surface वर dance करतात ना. स्टेजच्या आतमध्ये dance नाही करत. Next, continue please. In. He is playing in the ground. Is playing in the ground. Yes. The chocolate is in my bag. Very good. The chocolate is in my bag. Continue. Yes. She is going in the church. There are many people in the temple. Yes. Anything in? बहुत simple है. बहुत easy है. In. ह्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये. Yes. In. In my jacket. I have phone in my pocket. He is cooking in the house. Correct. He's cooking in the house. She used to live in Pune city. Correct. She used to live in the jungle. She used to live in Pune city. Yes. Sentences. Guddu, you are not making sentences, huh? Sorry, sir. Continue. In.
Sentences with in. He is buying groceries in the shop. He's buying groceries in the shop. Yes. She is living in hostel. She's living in hostel. Yes. I used to work in a factory. We used to play in the swimming pool. He swims in the water. I go for swim in the well. Correct. I go for swim in the river. I am working from in the home. I'm working in home. घरात काम करतोय मी. Yes. There is a match in Mumbai. I have a meeting in Bangalore. They are chilling in holidays. Will Smith born in America. There are many photos in my laptop. There are many photos in my laptop. I will return in 10 minutes. Very good. I will return in 10 minutes. Will Smith born in America. Correct. Joe Biden will come in India. Okay. In. Next one is what? At. When do we use at? Exact place, exact time. I will call you in 5 minutes. I will call you in 5 minutes. Yes. I will call you in 5 minutes. In 5 minutes. I will meet you in after. I will meet you after 1 hour. Guddu, I don't listen to you because your voice comes very, very, very low. He helped me in my bad time. He helps me in my bad time. Please sit in the class. Please sit in the class. Yes. Yes. I will meet you in the college. I will meet you in the college. He done presentation in the meeting. She has done presentation in the meeting. Okay. At when do we use at? At कधी use करतो आपण? At for? Exact place and exact time. Correct. Exact place and exact time. Correct. For example, exact place and exact time. At the bus stop. Bus stop वर. आता bus stop काय सगळीकडे असतो का? No, it is an exact place. Exact place at bus stop. Next, at the door. Door, exact place. At the door. Door वर. Door वर. At the bus stop वर. At the door वर. Next, at the traffic lights means what? Signal. At the signal means what? At the traffic lights. At the traffic lights. Next one, at her desk. At her desk. तिच्या desk वर. At her desk. She is working at her desk. Next, there is somebody at the bus stop. कोणीतरी आहे bus stop वर. There is somebody at the door. Door वर कोणतरी आहे. वाजवतोय. Next, the car is waiting at the traffic lights. The car is waiting at the traffic lights. कार कुठे wait करतेस? Traffic lights वर. The car is waiting at the traffic lights. Vicky is working at her desk. Vicky is working at her desk. तिच्या desk वर काम करते. तर desk काय proper place झाली का नाही? So for perfect places, for exact places, we are going to use their at. For example, Vicky is working at her desk. The car is waiting at the traffic lights. There is somebody at the bus stop. There is somebody at the door. Can you please give me some sentences with at? At. And see one more thing. At the top, at the bottom, at the end of. For example, now we have a book over here, okay? At the top, at the bottom. Now, this is the top, correct? Yes, yes sir. Wrong. No, sir. सर आपने लाइन मार इसलिए मैंने ऊपर है, ये ऊपर आएंगे ना, मेरे को लगा वो छो इसलिए ऊपर, वो This मिडल is the top. मिडल To buy. अंकित. This is the bottom. This is the top Yes sir. and this is the bottom. Correct? अभी इसको bottom बोलेंगे क्या? No, sir. इसको bottom बोलेंगे क्या?
No, sir. इसको बॉटम बोलेंगे क्या? No, sir. बॉटम इज एग्जैक्ट प्लेस. दिस इज द बॉटम. ये बॉटम है, ये एग्जैक्ट प्लेस है इसका, बॉटम. एंड दिस इज द टॉप. टॉप इज द एग्जैक्ट प्लेस. ये टॉप है इसका. So top is exact place, bottom is exact place. That's why we call it at the top and at the bottom. Bottom at the top, at the bottom. आता middle साठी काय लावणार? What do we use for middle? In the Shivdas, middle. middle. In the Correct. middle. In the middle. Middle. मध्ये. आणि in कधी use करतो आपण? When something is Inside. Inside. very good. When something is inside and Shivdas, when something is Karthik, Guddu, when something is inside and when something is I said that. big. So this is what big part. Big part. Top खाली इतना है, bottom खाली इतना है, but big is middle is big. Middle is big. So we are going to use it in the middle and at the top, at the bottom, at the top, at the bottom, at the top, at the bottom. For example, here at the top and at the bottom. So at the part, at the top, at the bottom, at the end. Write your name at the top of the page. My mouse is at the end of this. My house is at the end of the street. At the end of the street. आता street च्या end मध्ये. आता for example, we have a street, right? So exact place के लिए अपन क्या लगाएंगे? आता हे हा रोड आहे आपला, बरोबर? स्ट्रीट आहे. माझं घर इथं आहे. स्ट्रीटच्या कोणेला आहे. एंडला आहे माझ्या स्ट्रीटच्या. सो आता ही पर्टिक्युलर प्लेस झाली का नाही? Yes, and for particular places we are going to use their at the end of the street. At the end of the street. So can you please give me some sentences with these words? At the bus stop, at the top, at the door, at the traffic lights, at her desk, at the bottom, at the top. Make sentences with these words. Make sentences with at. I will meet you at college. Suppose for example, अभी जैसे गुड्डू है, गुड्डू को उसने बोली है, गुड्डू प्लीज मीट मी एट कॉलेज. मैंने बोला भी था आप लोगों को पहले. तो गुड्डू कहाँ पे मिलेंगे? Gate पे. At college gate. करेक्ट. एट द कॉलेज गेट. एट द कॉलेज गेट. बिकॉज कॉलेज का एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है? गेट. आता खिडकी, आपण खिडकीत नाही येतो का? No, sir. बाथरूम नाही जातो का? No. आपण कुठे जातो? गेट नाही Gate. जातो, गेट. सो गेट काय आहे? ती मेन 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 एक्झॅक्ट प्लेस आहे त्या कॉलेजची, त्या स्कूलची. ऍट कॉलेज मीन्स व्हॉट? गेट. एक्झॅक्ट प्लेस. ही इज स्टँडिंग ऍट द कॉलेज. Can you please give me some sentence with at? At सोबत sentence देता, please. At सोबत sentence पाहिजे, please. Continue. Continue, please. I'm at the home. I'm at the home. Yes. Continue. I'm at home. I get up at 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. उठतो मी. I get up He's at 6. standing at the door. He's standing at the door. Yes. And Yes. I will meet at the 7 o'clock. I will meet you at 7 o'clock. टायमिंग आता नाही घ्यायचं. आधी आपल्याला हे करायचंय. जर आपल्याला भेटत नसेल तर इथनच घ्या, इथनं चोरून इथनं बोला जरा पटकन सेंटेन्सेस. ऍट. If you want to meet me, so please come at the bus stop. Correct. If you want to meet me, so please come at the bus stop. Shivdas, Karthik, Guddu. Yes, sir. At. I have a party at my house. माझ्या घरी पार्टी आहे आज. Yes. We are At. waiting for. We are waiting for at the bus stop. We are waiting at the bus stop. Bus stop वर वेट करतो आम्ही तिचा. Very good. It's a He message. is looking at the window. He's looking at the window. Window वर बघतोय तो. Very good. At the window. he is teaching in the class. He is teaching in the class. Very At good. At कुठे मित्रा?
Okay. Yes. Good. Okay. गुड्डू भाई चुप बैठ रहे तू अरे make sentences. Good. Make sentences. पढ़ाई नहीं कर रहा है गुड्डू. No, sir. Karthik, can you please Yes. make sentences at the bottom, at the top, at the bottom, at the top? Please write your name at the bottom of the page. Please put the page number at the top of the page. He is sitting at the bottom of the tree. Very good. Yes, at the top, at the bottom. Bill Gates is the top of the multi-billionaire. फेकायचं नाही, फेकायचं नाही, फेकायचं नाही. Yes, at the top, at the bottom. At the top, at the bottom. That scientist name at the top of the page. Very good. Yes. Yes. He is looking at the top of building. He's looking at the top of the building. At. Nobody is sitting at my desk. माझ्या डेस्कवर कोणी नाही बसलाय. At the desk. Yes. At. The car will stop at the curb. Curb. At the At the curb. 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 वो क्या रहता है? The car will stop at. At the curb. What is curb? Guddu. I don't know, sir. Even you don't know. Very nice. काय पण फेकायचं का? Yes, continue please. Continue. The red car is at the end of the street. The red car is at the end of the street. Correct. Their wedding was at the town hall. Correct. Yes, continue. At. I'm at the office. Office च्या गेटवर आहे मी. Office वर आहे मी. The dog scratched at the screen. At the screen. On the screen we must say, not at the screen. Okay. Yes, at the top, at the bottom. Please write your name at the top. When college will start, we will meet at the college. Correct. When college will start, we will meet at the college. Yes, at. Sentences, please. Look at At the top, at the bottom. Yes, Guddu. Look at the building. Look at the building. Next. Yes. we are having a party at night Correct. We are having a party at night. Very nice. Very nice. Very nice. We have a party at night. Continue. Continue. I will stay at home tomorrow. I will stay at home tomorrow. Yes. Continue, please. I You will have stay at- to go at school. You have to go at school. शाळेवर जायचं आपल्याला. He threw the stone at the car. He threw the stone at the car. Yes. Education starts at home. Education starts at home. घरापासूनच start होतं education. Very good.
Education starts at home. Yes. car making. Yes, continue. She's standing at front of your shop. She's standing at the front of your shop. I go to bed late at night. I go to bed late at night. Yes, continue. Car is manufactured at the factory. At the work. Car gets manufactured at the factory. At exact place. Exact place. At. Okay. Karthik, Yes, sir. आपल्याला तिची शपथ. नेक्स्ट ऑन. आता ऑन कधी यूज करतो आपण? When do we use on? Upper. ऊपर, surface. Okay, for example, the box is on the shelf. The box is on the table. टेबल वर. हे टेबलचं हे काय झालंय? सरफेस आहे. दिख रहा है टेबल का सरफेस? त्याच्या वर आहे. त्याच्या वर आहे. हा सरफेस आहे. त्याच्या वर आहे. ऑन 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 म्हणजे त्याच्यावर त्याच्यावर त्याच्यावर. उसके ऊपर. उसके ऊपर. That's what on. For example, the box is on the table. On the table. Next, on shelf. Shelf वर. On a plate. Plate वर. On a balcony. Balcony वर. Do we say on a balcony or in a balcony? On. Why on? Because वो ऊपर रहती ना पहले म्हणजे In the balcony. In the balcony, sir. no sir on. Oh, शपथ, इन द बाल्कनी नाही येणार, ऑन द बाल्कनी येणार. का? कारण की बाल्कनी बेसमेंट मध्ये असते का? आमची बाल्कनी बेसमेंट मध्ये. तुम्ही पण या जरा. हा तरी बेसमेंट मध्ये आम्ही बाल्कनी बनवली आहे नवीन. येस, बेसमेंट मध्ये बाल्कनी असतात का अंकित? शिवदास, बेसमेंट मध्ये बाल्कनी असते आपली? No, sir. बाल्कनी नाही सर, पार्किंग आहे. व्हेरी गुड बॉय. पार्किंग आहे त्याच्यामध्ये. पण बाल्कनीसाठी काय लावणार आपण? ऑन. कारण की बाल्कनी पहिल्या फ्लोअरला येते कमीत कमी. सो ऑन अ बाल्कनी. नेक्स्ट, ऑन द फ्लोर. फ्लोर वर. का? कारण की फ्लोर वर असतो ना. ऑन द फ्लोर. नेक्स्ट, ऑन द वॉल. वॉल वर म्हणजे दिसतंय हा पिक्चर? ऑन द वॉल. देर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल. देर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल. नेक्स्ट वन, ऑन अ डोर. डोर वर. ऑन अ डोर. आता इथं काहीतरी फोटो लागलाय समजा या डोरवर, तर आपण त्यासाठी काय बोलणार? ऑन अ डोर. डोरवर. डोरवर. ऑन अ डोर. ऑन अ डोर. नेक्स्ट वन, ऑन द सीलिंग. सीलिंग वर. ऑन द सीलिंग. आता हे सीलिंग वर लावलंय का? दिसतंय का आपल्याला? देयर इज अ फॅन ऑन द सीलिंग. सीलिंग वर. ऑन द विंडो. विंडो वर. ऑन द विंडो. ऑन द विंडो. विंडो ही विंडो आहे त्याच्यावर. ऑन द कार्पेट. कार्पेट वर. हा कार्पेट आहे त्याच्यावर. ऑन द फ्लोर. फ्लोर वर. हा फ्लोर आहे त्याच्यावर. ऑन द कार्पेट. ऑन द ग्रास. ऑन द फ्लोर. सो ऑन म्हणजे त्याच्यावर. खूप सिंपल आहे. खूप खूप व्हेरी 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 इझी. ओके. फॉर एक्झाम्पल, there are some books on the shelf and some pictures on the wall. There are some pictures on the wall. Wall वर खूप काही pictures आहेत. There are some books on the shelf. Shelf वर खूप काही books वगैरे आहेत. There are a lots of apples on those trees. On the tree there are many apples. त्या ट्री वर खूप काही apples वगैरे आहेत. There are many trees. Sorry, there are many apples on the tree. There are many apples on the tree. Next one, don't sit on the grass, it's wet. आता ग्रास वर बसू नका कारण की ती काय आहे? ओली आहे. ये ग्रास आहे इसके ऊपर. सो ऑन द ग्रास. ऑन द ग्रास. देयर इज अ स्टॅम्प ऑन द एनवेलप. आता हा एनवेलप आहे त्याच्यावर स्टॅम्प आहे. दिसतंय आपल्याला? आहे का नाही? स्टॅम्प त्याच्यावर आहे. तर आपण काय बोलणार? ऑन द एनवेलप. एनवेलप वर. राईट युअर नेम ऑन द एनवेलप. एनवेलप वर नाव लिहा. नाव लिहा एनवेलप वर. ऑन द स्टॅम्प इज ऑन द एनवेलप. ऑन द एनवेलप. देयर इज अ स्टॅम्प ऑन द एनवेलप. नेक्स्ट, ऑन अ हॉर्स. घोड्यावर. ऑन अ बाईक. बायसिकल वर. ऑन अ मोटर बाईक वर. हु इज दॅट मॅन ऑन द मोटर बाईक? आता हे काही काही गाडी वगैरे असते त्यांच्यावर ऑन लागतो. कसल्या? ऑन बाईक. असं आपण डायरेक्ट बसतो ना, कारण की आपण असं जातो का त्याच्यामध्ये इंजिन मध्ये बसायला? No, sir. सो ऑन बाईक. ऑन हॉर्स. डॉंकीवर कसं बसतो आपण?
On donkey. Yes or no? Yes, sir. है कि नहीं गुड्डू? So, on a bike, on a motorbike, on a bicycle, on a horse. Can you please give me some sentences with on? सर Take words and on. Yes. आपने बोला कोई कोई सिर्फ बाइक के लिए लगता है, मैं समझा नहीं वो. हाँ, तो कोई कोई बाइक के लिए नहीं लग रहा है, इसके लिए पूरा ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो पूरा. ध्यान से कुछ सर. कुछ गाड़ी के लिए, कुछ कुछ बाइक्स, सॉरी, कुछ कुछ व्हीकल्स के लिए ऑन लगता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ हॉर्स, ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ मोटर बाइक. सेम केस, ट्रक के लिए क्या लगेगा? आई मीन द ट्रक. I'm on a truck. ट्रक के ऊपर चढ़कर जाते हैं ना, इसके लिए I'm on a truck. नेक्स्ट, I'm on a bike. बाइक पे भी चढ़कर बैठते हैं इसके लिए. I'm on a train. ट्रेन पर भी चढ़कर बैठते हैं इसके लिए. I'm on a plane. प्लेन पर भी चढ़कर बैठते हैं इसके लिए. I'm on a ship. शिप के अंदर भी चढ़कर बैठते हैं. बट कार के लिए क्या लगेगा? अंकित, what are we going to use there for car? शिवदास? In. करेक्ट, in. फॉर In. एक्झाम्पल, कारला आपण चढून जातो का? असं 50-60 शिड्यांवर मग नंतर कार येतात आमची. नाही sir. नाही ना? व्हेरी गुड. सो इन कार मध्ये आपण डायरेक्ट पाय टाकतो, कार के अंदर अपन डायरेक्ट घुसते तो वहां पे लगेगा इन द कार मध्ये. नेक्स्ट, इन द बोट मध्ये, इन द बोट, इन द कार, इन द बोट. बससाठी काय लागणार आपण? बस. On. ऑन. करेक्ट, ऑन द बस. कारण की बसवर आपण काय चढून जातो. ज्याच्यावर आपण स्टेप अप करतो म्हणजे काय, ऑन यूज करायचा. आणि ज्याच्यामध्ये आपण स्टेप इन करतात तिथे आपण यूज काय करणार? इन. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Very good. Now, without time pass, make sentences with these words. पटकन, पटकन झटकन English शिका. पटकन sentence बनवा. Continue please. On. Yes. The book is He's on the dancing on the table. floor. एक टक्कर नाही मारायची एकमेकांना. Yes, continue. He's dancing on the floor. He's dancing on the floor. I am free on Sunday. Yes. We depend on you. On He you. is running on the ground. On the ground. Yes. Are you on Facebook? Are you on Facebook? तुम्ही फेसबुकवर आहे का टाइमपास करण्यासाठी? व्हेरी गुड. मेक सेंटेन्सेस. असे सेंटेन्स पाहिजे मला. I put there some pictures on my wall. There are some lights on my ceiling. Yes, continue. Goat lives on grass. Good. She is on the bus. I Good. am depending on you. Very good. He's walking on the road. I'm walking on the road. Don't disturb me. I'm on the plane. Don't disturb me. I'm on the plane. Yes, I'm on the balcony. I'm on the balcony. Yes, on. Ankit, Shivdas, Karthik. Who On. is that man on a horse? Who is that man on a horse? I'm Yes, on the vacation. I'm on my vacation. Say something on the shelf, on the cupboard. Please, I put my Wi-Fi on the cupboard. I put my router on the cupboard. Please put that box on the table. Will you go on trip? Will you go on a trip? Yes. Would you like to dance on the stage? I turn on the lights. Stage. Yes. I turn on the lights. I turn on the lights. Yes. The train came on time. The train came on time. आप लोग ऐसे सेंटेन्स बना रहे जो की आगे आने वाले हैं. जे आपल्याला पुढे करायचे ते सेंटेन्स आपण आता करतोय. I want new sentences like this. Physical sentence चाहिए मुझे. On. त्याच्यावर. The speaker is on the table. आणि आपण सेंटेन्स काय बनवतोय? I'm going on a date. है की नाही गुड्डू? No, sir. Yes, continue. The remote on the bed. Very good. Can I try this jacket? Can I try? Very- Can I try on this jacket? Very good. This thing. Your book is on the desk. Very good.
There are many photos on wall. There are many photos on the wall. There is too much garbage on the floor. There is too much garbage on the floor. Jacket is on the desk, door. The jacket is on the door. Yes. She's standing on a balcony. He's standing on the balcony. Yes. सर Yes. जो विंडो के पास नहीं कि थोड़ी जगह रहती है उसको क्या बोलते हैं? विंडो के पास में थोड़ी जगह रहती है मतलब? अभी विंडो जो रहती है ना अपनी खिड़की थोड़ी नॉर्मल नहीं क्या जगह रहती? विंडो एटिक की बात कर रहे हैं आप? हाँ विंडो के पास जो जगह रहती है थोड़ा बहुत अपन एटिक. विंडो एटिक. विंडो एटिक. The scent Yes. is Continue please. the scent on the window antique. Attic. Attic. Window attic. Correct. Yes. He is Laptop making is sketch on on the canvas. Very good. On the canvas. He's painting on the canvas. He's making a drawing on the canvas. Yes, Miss Chaitali. The laptop is on desk. The laptop is on the desk. The fan is on the table. The fan is on the table. You, Shirt is hang on the wall. Correct. Shirt is hanging on the wall. you I are, hang my shirt on the wall. you are Yes. on the right track. Yes. You are on the right track. You are on the right track. Yes. Yes. I was born on May. मी मेवर बॉर्न झालेलो. आय शपथ काय हो सर. ऐकायचं नाही. I was born the I 16. was born on Sunday. I was born on Monday. I was born on Urli Kanchan Day. No, Pune. I'm Okay. I'm born in Pune. Okay. चला कंटिन्यू ऑन. कितना इजी है यार. आप लोग कितना उसके लिए कितना सोचते बैठे हैं. The Can you please chalk give? is on desk. Very good. On a horse, on a bicycle, on a motorbike. Yes, I will come on a horse. I left my charger on the table. Correct. Karthik say something. I will come on a horse for you. आओ तुमच्यासाठी काय पण horse वर. Yes. Guddu, Yes, sir. I will come on a donkey with you. I met her on my way to school. Okay, I met her on my way to school. Yes. On. Sentences please. On. There is apple on the desk. Very good. I am Continue, going to Pune on a bike. We I'm are going on to the go way. on bike. Where I'm did on the way. you get this bus? Repeat once again. Where did you get on this bus? Correct. Where did you get on this bus? Yes, on. खूपच इझी टॉपिक आहे पण आपण त्याला सेंटेन्स बनवून त्याला अवघड करतोय आपण. Don't step on the सेंटेन्स न बनवताना आपण बनवत नाही सेंटेन्स बरोबर त्याच्यावर आणि आपण अवघड करतो टॉपिकला. He had decided on new policy. We have decided on new policy. Yes, on. The ring is on my finger. The ring is on my finger. I agree Yes. I agree with you on this point. on this point. Sir, hello Yes. sir. Yes, ma'am. The ring in my finger, yeah, on my finger. Actually त्यांनी असं ठेवलेले फक्त. In the finger. तसं in येणार. The ring is in my finger. Yeah. Yes, Okay, continue. Train are On. Yes, on. Anything else with on? All right, let's go for the next one. In, at, on, places 3. आता एक दुसरा. आता आपण याच्यामध्ये बघितलं असेल. We use in
when something is inside, when something is big. Definition is same. We use on when something is surface, when something is on base. When do we use at? For exact time, exact place. But we can use in for one more thing. Ideas. Ideas के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं? In यूज करते हैं. ओके, आयडियासाठी पण आपण काय यूज करतो? इन. आता मोठे पण असू शकते किंवा आत पण असू शकते. आपण त्याला काय त्यासाठी आपण काय करणार? इन. ती जागा नसते, आयडिया असते फक्त, त्यासाठी आपण इन यूज करणार. फॉर एक्झाम्पल आता आपण काय बोलतो? आय हॅव मेनी फीचर्स इन माय कॅमेरा. माझे कॅमेरेमध्ये खूप फीचर्स आहेत. आय हॅव मेनी ऍप्लिकेशन्स इन माय फोन. आता फोनच्या आतमध्ये असतात का ते? दिसतात का आपल्याला ठेवलेले? No, No. sir. No. Yes or no? So in my phone, for example, what is in your mind? तुमच्या माइंड मध्ये काय आहे? उघडून दाखवा जरा. दाखवू शकतो का आपण? No, No, sir. sir. हेलो. अरे आप लोग ध्यान दे रहे कि नहीं, कि सो गए आप लोग? Yes, sir. आज कसं तरी कंटाळलोय ना आपण, जरा बोर वाटतंय ना जरा एकदम. Stories no. काय राव मंडे परत. यस. अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बोलो. मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन? Yes, sir. संजय सर मेरे को वो डायलॉग नहीं किया. नहीं. अरे यू रातलू. सर वो डायलॉग याद है मेरे को संजय दत्त की. कौन सा? वो नहीं क्या उसकी पिक्चर की कौन सी वो उसके मम डैड पर है उसमें अंदर रियल के क्या नाम है वो बोलता गले मिलने का टाइम पे सो क्या तो जो पिक्चर का नाम था ध्यान में आ रहा पर उसको है ना वो हीरो पूछता कि मैं पूछ सकता हूँ, वो बोलता नहीं. वो डायलॉग याद है. जादू की झप्पी. यस सर, जादू की झप्पी देने की. वो कौन सी पिक्चर में था नहीं ना सर? मुन्ना भाई एमबीबीएस. Wow. ओके. आपला अंकितचे फेवरेट आहे जरा संजू बाबा. Let's go. Himalayas. My question is there. How did Himalaya become? हिमालय बना कैसे? पता है आप लोग को? कुदरत का करिश्मा. हिमालय कैसे बना? मेरे को एक दिन याद दिलाना, जिस दिन मैं एकदम फ्री मोड में रहूंगा ना, आप लोग को मैं सिग्नेचर सिखाता हूँ. Ah, yes, sir. आपको पता है क्या हुआ है अभी लास्ट वीक में? क्या सर? No, sir. आई हैव वन ऑफ माय स्टूडेंट. मेरे एक स्टूडेंट है. हु सर? है एक. अरे आपने वो काय, अरे ओ कौन आहे ती? जरा मला नंबर द्या ना तिथे. नंबर पण ऐसे चांगली Sir, आहे का? sir, tell her name. No. Relax. I have one of my student, न्यू स्टूडेंट है मेरी. अभी क्लास लगा के उसको 2 weeks ही हुआ है. When I said, "Ma'am, please make sentences," she did not speak in the whole class. What I did, I texted her personally on Zoom. मैंने उसको Zoom के chat box के अंदर से उसको personally text किया मैम को. And I said, "Ma'am, please make sentences." कारण की बघा, आपण फी दिलेली आहे, पण आपण अभ्यास करत नाही. चांगलं आहे का नाही? नाही. आपण बोलत नाही, कसं होणार आपला? सो मॅम प्लीज मेक सेंटेन्सेस. त्या मॅडमनी काय बोलले मला माहिती? माझे हात पाय एकदम नाही का असं शिवरिंग करतात सध्या. ओ माय गॉड, आय सेड ओ माय गॉड. मैंने वो मैडम को क्या पूछा है मालूम है? आई आस्क्ड हर ओनली वन थिंग. मैंने मैडम को कुछ भी नहीं बोला. मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला. I said, "Can you please show me your signature?" What did I say? Show me your signature. Show me your signature. Madam was completely confused and shocked. क्या सर क्यों? मैं बोला, "Can you show me your signature?" She asked me why. I said, "Just show me. I want to see."
She sent me on WhatsApp her signature. मैडम का मैंने सिग्नेचर देखा and I told her everything about it. And she was completely shocked. Oh my God, how do you know about me this much? I said yes. I know little bit. And I told her everything. मेरे को जो भी मालूम पड़ा वो सिग्नेचर से मैंने उनको बोला. And madam was completely shocked. Oh my God, sir, आपल्याला कसं काय माहिती आहे? हे तर माझ्या आई वडिलांना पण माहित नाही. मेरे माँ बाप को भी मालूम नहीं. This is called signature. You can identify a person by his signature. And I believe in it 50%. बाकी जो लोग रहते हैं ना बिब्लियोग्राफी वाले सिग्नेचर एक्सपर्ट वो लोग उसके अंदर बिलीव करते हैं 90%, 90 to 100%. I believe only 50%. और ऐसा होता है. Show me a signature, I'll tell you something about yourself. How can sir? अब वो मैडम को मैंने उनके बारे में बोला. She was shocked. Then I motivated her. And do you know what happened in the last lecture? In the last lecture, she was speaking. She came on the camera on Friday and she started speaking. She came on the camera on Friday and she was speaking. Madam bol rahi thi. So this is what ultimately I want you to go. My question is there, हिमालय बना कैसे था? मुझे कल इसका आंसर चाहिए. Sir, हिमालय बना कैसे? आपको मालूम है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे कि हिमालय बना कैसे और होता कैसे. लॉ ऑफ मोशन है वो. लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ gravity. ड्रिफ्टिंग. हिमालय बना कैसे? अच्छे लोगों को मालूम नहीं है. लोग सोचते रहे छोड़ना या ये सब क्या वैसे. आधे लोग पागल रहते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है बना कैसे. यस गुड्डू. How can sir you are telling one signature के ऊपर से कैसे बता सकते हैं आप? I have studied that. मैंने उसका स्टडी किया है. I can see the signature of a person and can tell about him. कोर्स है सर उसका उसका? हाँ कोर्स होता है उसका. सिग्नेचर देख के बता सकते हैं कि आदमी कैसा है. समझो एक आधा पर्सन अच्छा रहेगा और उसका सिग्नेचर खराब रहेगा तो ऐसा बहुत कम होता है. तिची बघायची का आपल्याला? कुठे नाही. तिची सिरीज आहे का आपल्याकडे? तिची कोणाच नाही पाहिजे मला. आय एम जस्ट आस्क यू. If you have her signature, then please show me. I'll tell you. या श्योर सर. Okay? हाँ. चांगली का क्या नाही? बोल रहा है सर? नो सर. माहिती ना आपल्याला because नो सर नो वैसा कुछ नहीं. he has 4-5 girls with him. That's why he said yes. Okay, I will tell you. Okay, no problem. You can send me on WhatsApp. So I will check it and we'll tell you. Okay. So this is what my question. How Himalaya became. आपको मालूम है हिमालय बना कैसे? सिंपल सी बात है. Because of drifting. जमीन जो है ना छोटा होती जा रहा है अभी. जमीन ऐसे टक्कर मारता है. टक्कर मारने की वजह से वो जब जमीन ने एक में को टक्कर मारा तो वो बनते गया. वहां से जमीन ने जब एक में को टक्कर मारा वहां से वो क्या हुआ? बनते गया. आप लोग मालूम है पानी मारते दीवार पे ऐसे नीचे फ्लोर पे पानी मारते, पानी ऐसे जाता है और ऐसे खड़ा हो जाता है. पानी जाता है ऐसे खड़ा हो जाता है. यस नो? Yes sir. Yes, sir. देखा? हाँ. It is the same. When the land was drifting, बहुत सालों से, हजारों सालों से क्या हो रहा है? जमीन ऐसे खिसक रहा है. खिसकने की वजह से टक्कर मार रहा है जमीन के अंदर, जिसकी वजह से पहाड़ बना है वो. जिसकी Sir, वजह से वो पहाड़ बना है. हिमालय ऐसा बना है. यस मैम. मैंने सुना था कि हर साल मतलब 1 year होने के बाद 1 inch और 2 inch वो बढ़ता है हर साल. हाँ हिमालय. तो बढ़ता किस लिए है वो आपको मालूम है? ड्रिफ्टिंग की वजह से. पहला अपना इंडिया भी यहाँ पर है ना. पहला अपना इंडिया यहाँ पर नहीं था. अपना इंडिया थोड़ा नीचे साइड में था. थोड़ा नीचे था. ऊपर कैसे गया? क्योंकि जग अभी थोड़ा छोटा होते जा रहा है. जमीन जो है ना, जमीन अभी आप लोगों ने ज्योग्राफी तो पढ़ा रहेगा बचपन में
सो ज्योग्राफी के अंदर अपने को लिखा हुआ क्या था, जमीन का कितना पार्ट 71% इज फिल्ड विथ वाटर, करेक्ट? हाँ, अभी 75 कितना हुआ मालूम? अभी कितना हुआ मालूम? वो अभी कितना हुआ है वो? आई थिंक 76% हुआ है अभी वो। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। पहले 71% था, अभी 76% हो गया वो। मतलब जमीन खत्म, पानी भरते जा रहा है ऊपर। मालदीव्स देखा आप लोगों ने? ऑलवेज। हाँ, मालदीव्स भी अभी डूबने वाला है, पानी के अंदर डूब जाएगा। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द वे ऑफ हिमालयाज। कभी फुर्सत में आप लोग को बताऊंगा एकदम डिटेल में। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके? जिस दिन मूड में रहा उस दिन आप ओके लोग को सर। सिग्नेचर पढ़ते कैसा, बनाते कैसा, लिखते कैसा, अच्छा कैसे करते, ओके? और सर वो आप एक्यूट एक्सेंट वाला भी सिखाने वाले थे, नेम। यस यस, सिखाता हूँ ना, मैं सिखाता हूँ आप लोग को। मैं ट्राई करता हूँ, जब बोलने की कोशिश करता हूँ सामने किसके, मेरे को बराबर बोलते नहीं आता। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आएगा बोलने। टेंशन लेने का नहीं, बिंदास आएगा बोलने। जस्ट लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए बस, आएगा। मैं आपको आगे ट्रिक्स देता हूँ कि कैसे बोलना है। फ्राइडे के दिन याद दिलाओ मेरे को। हॅलो. ओके सर। या कार्तिक? हा सर, ते पाण्याची लेवल वाढते बघा, तुम्ही म्हणले 71% 76 झालं. त्याचं ते ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे होतं. हाँ, ग्लोबल वॉर्मिंग मुळे होते तो, एक्झॅक्टली. इसके- अंटार्क्टिका नाही का, अंटार्क्टिका? हम्म. अंटार्क्टिका ice is getting melting. The ice of Antarctica is getting melt होते ती सर आणखी 2 अंटार्क्टिकाची वर्ष आहे आईस. ना, आणखीन 200 वर्षांनी ते पाण्याचं लेवल वाढत जाणार आहे. वाढत जाणार ती. हो. पुढं खूप अवघड होणार आहे याचा, लय बेकार होईल पुढं. सर बघतो इसलिए आपण लोग आता बोलते काय. हैं क्या जर माझी गरज जॉब पडली तर बुड़ जातो रहा मी है। स्वतः. ओके, क्या बोले? इसलिए लोग बहुत बोलते हैं कि जग बुरी होने वाली है। हाँ, नाही जगबुडी वर्ल्ड होणार आहे ती, पक्का आहे ते, एकदम निश्चिंत असतो. वर्ल्ड संपणार आहे लवकरच, जास्त नाही वेळ, जास्त नाहीये. त्यामुळे बोलते बघा, जरा करून घ्या, जरा इंग्लिश शिका, सगळ्यांना सांगा आपले नवीन बॅच इंग्लिश शिकून घ्या, जगबुडी होणार आहे. बाय, बाय सी यू. सर, चीरियो सर, सर. थैंक यू।